Morning, Uncle. I think we are live. Hi, Neena ma'am. We are live. Hello, everybody. We will be starting Good the morning. session in a few minutes. We'll be sharing the link with all of the parents. Hi, Uncle. Let me just give you a backdrop. We are in a big hall, and there are a lot of sounds and commotion behind because a lot of activities are going on in different stalls. So, if I apologize to the audiences for any kind of din in the background, and we'll try to stay focused on what we are talking. Uncle, we are live. We should go ahead. Yes, ma'am. We'll wait for a few minutes. We'll wait for some few parents to join in, and then we can start. Okay, okay. Okay, okay. Good. There are 4, 5 parents here also. Right now in the Armenian, along with some assisted living service providers uh, from Gurgaon and from some place from UP, Saksham and Samark and Khushbu. These are the organizations. And of course, we are also here. Alap. Let me share the brochure. This is the Alap brochure that we got made. I think we are It's releasing it today in front of you guys. beautifully made, ma'am. On this is the uncle. Tell me something. While we are waiting for the parents to come, can you run that Alap video which we sent to you? Sure, ma'am. One Is second. it possible? Give me Yeah. 1 second. So, I would like to tell all the viewers that have joined us right now. First of all, welcome everybody, and it's an amazing platform that we have here because the whole thing is being streamed directly from International Purple Fest Goa 2024. As we all know, International Purple Fest is stands for an exemplary step taken by Goa government and its unwavering commitment to the empowerment of individuals with disabilities. And it's a fest to celebrate persons with disability, and it happens. It's an annual event that happens every year, and this is the second cohort of it. And I would like to welcome our expert today, Neena ma'am. So, Neena ma'am, I would give a small introduction of yours to all of our viewers, all of the parents that have joined. Um, Neena ma'am is an accomplished poet and a playwright and a passionate advocate for autism. With 17 years of active engagement in autism advocacy, she has played a pivotal role in shaping the RPWD Act and creation of National Trust's autism website. She is also the founder of ALAP, which is Assisted Living for Autistic Persons, and it's a residential facilities for people with autism. And she has also mentored after the creation of ALAP. She has also mentored multiple other assisted living facilities all around the nation, as Neena ma'am has put out in her own words, and it's a real world challenge that the family size is shrinking day by day in India. And it is a real and utmost importance for the community to come together and find support and solutions. She also spearheads a forum which is called Assisted Living Solutions with more than 3,000 followers. Her impactful journey includes award winning documentaries and other prestigious accolades. She is driven with the commitment to address the burning question, what after us? And with the what after us as the central theme of Nayi Disha's pavilion this time at International Purple Fest 2024, we are excited to host her as our respected expert for this session. Thank you so much, Nina ma'am, for joining us here. And Thank you, Uncle, and thank you very much, Nayi Disha. And I'm always impressed by the work you guys are doing. I think more power to you guys. I'm happy to collaborate with you guys. Yeah. thank you so much, ma'am.
So I can see on YouTube we are joined by around 17 of parents, 17 parents have joined us here on YouTube, and we have multiple parents down there at our stall as well, as I believe Neena ma'am had have told us. Yeah, Um, yeah, yeah. I can, if I could show you that, can I show you? All yeah, the parents I know, mostly from yeah, Goa it's and from Delhi as amazing. well. Yeah, Right, yeah. right, right. It's a very vibrant environment here right now. It's like a confluence of so many thoughts and good practices and knowledge, I would say. And I think we're just warming up. So there will be more learning for all of us. Yeah, yeah, yeah. Right, ma'am. So I guess we can start with today's topic of understanding assisted living options for young adults. Um, Absolutely. so I guess we can start with the discussion topic, which is a burning question in all of the parent community and parents as well, in families as well. That is, what are the common challenges that parents face while addressing this question of what after us? So, Uncle, I will take you a little further back Hmm. and give an overview as to where we are all. What after is like a postgraduate or a research question right now. Let's go to Yeah. the very primary level. That if I talk about autism, because I am like autism advocate, champion, and all that. So autism itself has been a very new knowledge in our part of the world. In the past 20 years only it started gaining, consciousness of its own. People are talking at least now when you meet a complete stranger. I met somebody on my way to Goa on the airport, and I told why I'm coming here, and she said, oh, okay, they need occupational therapy also. And she had no relationship with autism at all. So that level of awareness has started coming now. And I would say Right. a lot of credit goes to our generation of parents as well for doing extensive advocacy. That we are here at least that people, an absolute stranger at least, nod his or her head in recognition with difference. That yes, there is a special need, and autism is also something that we're trying to understand. So that is right now the situation. Right. Government of India has very recently, only in 2016, added new 21 new disabilities. So when we talk about RPWD Act, the government's Hmm. departments down to the ground grassroots level, let's say social welfare officers and all, they do not know. They are Correct. not even aware of the new the laws which have been provided and the new definitions and what else. So अभी तक वो mindset नहीं है. So because India is a very very huge vast country with diverse sensibilities and Hmm. plethora of challenges. Correct. So एक बात तो ये है कि we cannot have one size fit all kind of a solution. Hmm. Because of multiple plethora of challenges, we have to come out with multiple ideas, multiple solutions. So that is one thing. Now, we also have economic divides. Then we are talking about two-tier, three-tier cities, and we're talking about four cosmopolitans and cities and all that. So every city has its own advantages as well as Disadvantages, disadvantages. right. If parents are more good in the larger cities, but then they lack the community support. Hmm. Whereas in a smaller city or a more rural town, lack of awareness is compensated by community support. So you Right, right, understand, right. there are still traditional family systems where in a village or in a small town, joint family systems are available. So we have to find an amalgamation of the right knowledge and the right support systems. So these two things has to work in tandem, which is not happening right now. There are jerks, and we are evolving in packets.
Right, ठीक है ना, right, वो right. एक In certain pockets of स्मूथ the बोर्ड nation. हमारा, हाँ, Hmm, एक hmm. स्मूथ ग्राफ अभी हमारा बना नहीं हुआ। तो दैट इज एन ओवरव्यू व्हिच आई वांट टू गिव। नाउ कमिंग बैक Right. टू चैलेंजेस क्या है, तो सबसे पहले चैलेंजेस पेरेंट्स इटसेल्फ। अरे यार एक अवेयरनेस का प्रॉब्लम है। Hmm, आशीष, hmm, hmm. कैन यू हेल्प मी सॉर्ट आउट समवेयर? ये मेरा काम का एक ही चीज है समवेयर। तो पेरेंट्स को अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। Right. हाँ, पेरेंट्स को अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। उसके लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर दे नीड टू बी इन द प्लेस। इसमें हम जो एडवोकेसी करते हैं, हम लोगों को भी थोड़ा Hmm. और प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। ऑलरेडी है, लेकिन हम लोगों को वी हैव टू मल्टीप्लाई आवर फोर्सेस। दैट इज Correct. वन थिंग कि उनको पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन मिले, बिकॉज आई एम इनटू एडल्ट लिविंग। ठीक है, Hmm, मेरे hmm, पास hmm. स्टिल पेरेंट्स आते हैं जो कि अंडर इंटरवेंशन पे अच्छे हुए हैं। और कई पेरेंट्स से, क्योंकि मैं असिस्टेड लिविंग के बारे में बात करती हूँ, तो दे से कि मैम हमारे बच्चे का क्या होगा, देयर चाइल्ड इज 6, तो आई टेल देम Hmm, फर्स्ट hmm. यू फोकस इन अ होम एनवायरनमेंट कि Hmm. आप उसको कॉन्शियसली अभी से इंडिपेंडेंट कैसे बना सकते हैं। Hmm, hmm, क्योंकि hmm. बनाए से असिस्टेड लिविंग जरूरी है कि I believe there is a challenge of network from Nina ma'am's side. Apologies to all the viewers. Give us 1 second. आपको अपने बच्चे को अपने से अलग भी नहीं, ये थोड़ा चैलेंजेस का सोल्यूशन एक ही नहीं हो सकता कि हमने हॉस्टल में वी हैव टू बिल्ड ब्रिजेस, सपोर्ट सिस्टम्स, या तो शेयर रिस्पांसिबिलिटी इसको हमको क्रिएट करना पड़ेगा। इट्स नॉट कि हम और अपने बर्डन को उन पे ला दें। द वेरी फ्रेजाइल इकोसिस्टम दैट इज एक्चुअली बीइंग बिल्ट राइट नाउ, like I will give you example, I have a very small niche system only because I did not want to dilute the Kindly I give us want a few minutes. to give my children a home-like environment, which cannot be people with disabilities. तो जितना इंडिपेंडेंस मैंने घर क्या होता है, या इट्स बेटर। Yeah, it's better now. ओके, सो लाइक So आई I वाज believe, सेइंग, yeah. या So as you were आई saying वाज that, सेइंग दैट कि yeah. Hmm, hmm. कैपेसिटी बिल्डिंग जिस दिन से आपको डायग्नोसिस मिला है उसी दिन से होनी चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या Right, होता है कि पेरेंट्स बिकम सो एनग्रॉस विद द लेबल कि वो उससे बियॉन्ड ना अपने आप को देख पाता है ना बच्चे को देख पाता है। एंड दैट इज द correct, बिगेस्ट correct, डिससर्विस वी कैन डू टू अवर। तो उस चीज के ऊपर बहुत अवेयरनेस की जरूरत है। अर्ली इंटरवेंशन के टाइम से ही ये सोचना, इवन इफ अगर आपका बच्चा चल फिर नहीं सकता है, Hmm, तो hmm, भी hmm. आपको उसकी कैपेसिटी पे डाउट नहीं करना। जो सोच सकता है, हिज हार्ट इज बीटिंग जस्ट लाइक यू एंड मी, हिज ब्रेन Right, इज right, वर्किंग, उसके correct. सेंसिटिव परसेप्शंस वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे आपके और हमारे काम कर रहे हैं। लाइक आई गिव यू स्मॉलेस्ट ऑफ एग्जांपल। Hmm, ऑटिज्म में अक्सर नॉन वर्बल होते हैं बच्चे, hmm. तो पेरेंट्स अज्यूम बिकॉज ये नॉन वर्बल है तो नॉन हियरिंग भी होगा और Correct, नॉन correct. फीलिंग भी It's होगा, true. नॉन Yeah, इमोशनल होगा। उसके सामने ही उसकी प्रॉब्लम्स की बातें करते रहते हैं। और बिल्कुल. वो ये सुनता हुआ बड़ा होता है कि ये नहीं कर सकता, Hmm. मैं ये नहीं कर सकता। तो आपने उसकी सेल्फ एस्टीम बिल्ड नहीं करी। Correct. और फिर क्या करते हैं, वो जब चुपचाप हुआ है तो आप देन यू टिप्टो अराउंड, जैसे चुपचाप बैठा है, फटाफट मैं अपने काम कर लूँ। लेकिन Hmm, बच्चा hmm, hmm. सोचता है कि मैं चुपचाप बैठा हूँ, मेरे को देख नहीं रहा है। So then he will start throwing things or he will start throwing tantrums
So then everybody around the house will pay attention to him. Correct. तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का विशेष साइकिल शुरू हो जाता है। Hmm, और hmm, वो hmm, जब hmm. तक बच्चा छोटा है, कभी वरी कर सकते हो आप, तब तक तो ये बात अच्छी लगती है। लेकिन जब उसकी Hmm. दाढ़ी मुँह छाने लगती है और वो आपसे स्ट्रॉन्ग होने लगता है, फिर उसके यही टैंट्रम्स आपको अच्छे नहीं लगेंगे। फिर आप सटक में आते हैं, जी इसका कुछ नहीं हो सकता, ये हमसे संभला नहीं है, अब आप देखो, आप जानो, ये अभी हो रहा है, Correct. Correct. तो नहीं Correct. होना चाहिए। तो वी Hmm, हैव hmm, hmm. टू, अगर हम असिस्टेड लिविंग की बात करें तो इवन हमारा रोल भी ओवर आर्चिंग हो जाता है कि हम कॉन्स्टेंटली पेरेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करें, सो दैट वो पेरेंट्स अपने बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग अर्ली स्टेजेस से ही करें, ताकि हम पे इवेंचुअली बर्डन ना आए उतना। Hmm, hmm, hmm. Right. और Right. सेकेंड थिंग इज, दे फील कि ये चैलेंज हमारे पे यूनिक ही आया है, दुनिया में हमसे ज्यादा दुखी कोई है ही नहीं, हाँ. बस मेरा चैलेंज है, मैं ही समझ सकता हूँ, कोई समझ नहीं सकता। एंड दिस थॉट starts isolating them from rest of the world, which is incorrect way to start. आप ये सोचिए, and I always say that in every talk, till the time it did not happen with you, how much work were you? आप कितने लोगों कैसे संस्थाओं में गए, या आपने कितने ऐसे पेरेंट्स को पहले जाना कि उनके पास जाके बोला हो कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? नहीं किया ना। Correct. बट नाउ Hmm. इफ इट्स दैट पर्सन इज इन योर लाइफ, then it becomes your duty to impart that awareness to others, so that कल को जो आपके साथ हो रहा है वो उनके साथ नहीं हो। So Hmm. then we Hmm. will be able to increase our, will be able to widen our support circle। Hmm. क्योंकि Hmm. अगर आपने आपने लेफ्ट एंड राइट में 3 लोगों को अवेयर कर दिया, तो आपका सपोर्ट सिस्टम ऑलरेडी बनना शुरू हो जाएगा। दैट इज Correct. अनदर थिंग पेरेंट्स डोंट डू एंड डोंट रियलाइज। So that is the next very important thing you need to do, क्रिएट सपोर्ट सर्कल्स। अपने फैमिली से बात करिए। अगर आप कहते हैं कि हमारी फैमिली में तो कोई है ही नहीं, ना मेरे हस्बैंड का कोई रिश्तेदार है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, नेबर्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, उनको इंक्लूड करिए। ना जो सुनने से भी आपका डरिए मत, सर्कल है. Hmm. ना सुनने से डरिए मत। Hmm. नहीं करेगा ना कोई, आपकी जान तो नहीं ले लेगा ना। तो कोई 4 जनों में से एक तो हाँ भी करेगा, आपके लिए खड़ा रहेगा। इतना ही सपोर्ट कर दे कि अगर आप मार्केट जा रहे हैं, बच्चे को अगर वो देख ले, वो भी एक सपोर्ट सिस्टम है। कोई Correct. रिलेटिव Correct. आपको ये कहे कि मैं इसकी फीस भर देता हूँ, इसकी थेरेपी दे देता हूँ, एक्सेप्ट Hmm. दैट ग्रेसफुली। कई बार फादर्स में बड़ा ईगो होता है कि नहीं नहीं, हम किसी से हेल्प नहीं लेंगे। क्यों नहीं लोगे भाई जी? जी, आपको गिविंग करने के लिए रिसीविंग भी ग्रेसफुली करनी आनी चाहिए, तभी वो Correct. इकोसिस्टम। मैं आपको बड़ी अजीब से एक बात बताती हूँ। अगर आप हमारे, बिकॉज वही मैं बोल रही हूँ, इंडिया इज अ डाइवर्स सेंसिबिलिटीज विद डिफरेंट Hmm. रिलीजियस बिलीव्स एंड ऑल, और जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे। अगर आप एक बोलचाल की भाषा में, तो आप हमारे देवी देवताओं के कैलेंडर्स घरों में लगे रहते हैं, या कोई भी छोटे छोटे शहरों में भी सुन रहा होगा, तो वो, तो वहां पे देवी का, देविकता का हाथ एक सामने होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है। अगर आप देखिए अक्सर, one is in the giving mode, one is in the receiving mode. That is how the Right. energy works. Right. So you can draw that reference from your own religious beliefs. Hmm. Hmm. That Hmm. even God is telling you to receive, you need to give. To give, you need to receive well. Right. So what do? You give your knowledge, you give your information, and you will receive support. So, So ma'am, what you are yeah, doing is you are building the blocks. building the smaller blocks of the foundation of हाँ, support. आप Hmm. अपने आधार स्तंभ को रेडी कर रहे हैं, Hmm. Hmm. और जब तक वो नहीं रेडी होंगे, स्टडी नहीं होंगे, तब तक आप ये वोट आफ्टर अस की बात मत करिए। क्योंकि Hmm. अगर Hmm. आपने अपनी नींव को सुदृढ़ नहीं किया, इफ यू हैव नॉट स्ट्रेंथन योर रूट्स, देन यू विल नॉट बिकम अ ट्री व्हिच कैन गिव शैडो, यू नो। So that's the thing. So these are the two things: challenges, isolation, and capacity building and self esteem building नहीं होता, उसको पहले Right. काम करना जरूरी है। Exactly. So, summing up, actually, the most important thing Neena ma'am has pointed out as basically self-esteem and self-confidence building in your own child, and that can happen only through the first step would be acceptance.
acceptance, and then comes awareness of your own surroundings, and then advocating about it in your external circles as well. I guess I summed it right, ma'am. Absolutely. Yeah. Yeah, so it becomes very important to keep the emotional needs of your child in the center of everything, I guess. जो भी external injustice है, societal injustice towards your child, you have to create that circle that it does not penetrate that circle and reaches your, that injustice should not reach your child. And even if it reaches, you have to like make your child self-esteem and self-confidence so robust that it does not the external social injustice cannot break into it, right? Yeah. So See, the thing is, within this world, there are many worlds. correct, You create your own realities. And you, correct, correct. when you create your social circles, you attract like-minded people, you build communities. That is one thing which I said. Once you start Hmm. doing that, you will be building community of your own thing. फिर दुनिया में कहीं आग लगती रहे आप अपने वर्ल्ड को जो आपका इमीडिएट वर्ल्ड है आप उसको Correct. सिक्योर करो. That is the main thing which I'm saying. Correct. Um, so, Reena ma'am, you have had like 17 years of vast experience in this field, in advocacy and also assisted living. I would like to move ahead with another important burning discussion point, which is how has assisted living evolved in the Indian scenario? I mean, what was the case back in, say, 2005 or 2010, and what was the condition now? So I will start from my own journey. Like Yeah, my son is now 24. So I think when he turned 14 or 15, because in autism adolescence is a different challenge altogether. correct. There's a increased level of aggression because of self-expression, self-realization that where is my equity in this whole universe and all that. So Hmm. even I was struggling with this aggression and I was like trying to. And उस समय इतना सपोर्ट सिस्टम्स नहीं थे, इतना इंफॉर्मेशन नहीं था, इतना सोशल मीडिया का एडवेंट हुआ नहीं था उस समय. Hmm. So, and I was a primary caregiver at home, and I left my job, and because of that, my husband was doubly driven that one person has to earn more because we have a special needs child who will have to look after his life even when we are not there. But at that point, I thought that I am the primary giver. What happens if I drop dead tomorrow? That really shook me. I said, then I started looking around, and and I started asking parents who were Hmm. senior than me, and did not find much because they were avoiding this kind of Hmm. discussion altogether. Hmm. So I realized that there is not much of answers out there. So that set me off to looking around, you know. So I saw these government kind of institutions, and you used to get these very unpleasant stories about so many residents dying there because of malnutrition and all this, and they were not very private organization as such. So that led me to set up this forum on social media platform on Facebook called Forum for Assisted Living Solutions, and started talking about this. And I ideated, I think I am 5 years back, that what kind of systems will work or can Hmm. come. I wrote an article on that, and I started collating information on existing service providers. So at that Right. time, I had somewhere a kitty of 35 such, uh, which had multiple disabilities population, which were being Hmm. catered to, and they were scattered around the country. So, but then in the past 10 years, there has been a lot of active involvement of the direct stakeholders. So direct stakeholders are the people. Again, most of the NGOs in our field are being run by, started, founded by mothers who left their Hmm. jobs, their careers to look after their own child. And they also realize that there isn't much in terms of government services or
private schools which were taking their children or providing any kind, whether it was inclusion in Hmm, hmm, education, hmm. on jobs, vocations, or residential. So in the past 10 years, the big revolution has happened due to the parents' uh, activism. Hmm, hmm. So parent community has really woken up, and so it is an exciting time also. Uh, when I started looking around, I found Aparna Das running this a beautiful residential for girls because she's a sibling, and she Right. had was operating from this tiny hamlet near Masuri. So I went to her and I spoke to her, and I really liked the place. And that was one place which really resonated with me. But that time she was only having the facility for girls. So I Okay. sort of coaxed her into starting something for boys. So after 1 month, she came back and she said, "We are ready." So Amol Hmm, was hmm. the first male child in that residence. Right. So and then after slowly and steadily, the facilities are coming up. Um uh, so there are large kind of facilities where you have around 50 residents living in small cottages like Mr. Kundra's ashram, Hmm, for hmm, hmm, hmm. autism. Right. Ananda, of course, is there, which has been taken a lot of time because of challenges. It is challenging. It's not it facility wise, and to ensure that the quality is given. So the time it does take time, and it does have Hmm, challenges of hmm. its own. But Ananda is of course there. Then at one time we'll be I think having a live session with Kanan Sridharan as well. Hmm, At hmm, that hmm. time, I started looking around. I There was one parent who was a builder himself. So I said, here we are 15, 20 parents. Why don't you build, in one of your upcoming models, residential models, you provide us 15, 20 parents a residence. We'll all live together. We will be each other's support. And I think that time it was too new an idea. Correct. Hmm. But that is happening now in Scan, in Chennai. It is now coming up in Pune as well with Parachme builders. So things are moving. So like I said, Right. with a lot of challenges, multiple solutions. Ma'am, we can't hear you. No. Sorry. Can you hear me now? Can you hear me now? Yeah. But with a lot of disturbance in the background. Okay. Now, Yeah, better. better? Yeah. Okay. Yeah. So, so then there is my model, which is like a group home with 8 residents. All the parents living nearby. Because personally, I feel that just like you would not like to live with your parents with the rest of life. You would like to have your own space. Of That is course. a Yeah. husband is kind of living with that is. Just the kind of Right. job taking people everywhere around the world. So the scheme also going like this new concept of work from home is also coming up. So there is a complete graph happening. So like I feel that even if they are just poor parents, they can just buy a flat. Someone and all the kids can live there and they can provide their outer circle of support. So Hmm. there will be happening, certain setups are already happening and certain setups will happen. So that is the current Hmm. scenario right now. And I recently went to Dubai and when I presented this, I spoke to people from uh, African places, from Dubai locals and Hmm, people hmm, from hmm. US because here in India we have this.
टेंडेंसी के वेस्ट में तो सब कुछ अच्छा होता है, हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, बट थिंग्स आर रिवर्सिंग राइट नाउ। ये जो हमारे भीड़ वाला जो देश है ना, यही हमारे लिए सोल्यूशन दे रहा है। जो कम्युनिटी लिविंग है, lot of NRIs who went there for a greener pasture for the children, for better therapies and all. लेकिन जब अब Hmm. उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, now Hmm. they are seeking community support which they are not getting there. The kind of caregivers we Correct. are still can provide and the kind of communities we are building, that is happening. So there is a backward influx of parents also, Mama. But so Correct. that is the Correct. current scenario. Right. So So, yeah. every day I get a call from either Kolkata, from Bhubaneswar, somewhere from Patna, Ranchi, every day. But Right. the current scenario is parents still want something ready-made, like they can Hmm. go and take off the shelf and all. That is not going to happen because we are still very. And today, the list, if you go and see, list is of 75 such setups, Hmm. which is Hmm. a hardly handful. If we just take the last statistics provided by the government, there are 10 lakh autistic persons in India. और अगर मैं ये जो मैंने जो लिस्ट बनाई है जिसमें ऑटिज्म के लिए स्पेसिफिकली केटर कर रहे हैं Hmm. 25 ऑर्गेनाइजेशन, सारे जने मिलकर 500 को भी नहीं केटर कर रहे होंगे, लेस देन 1000. So you can imagine the need, the demand for it. Correct. तो Correct. अगर आप जहाँ पे भी बैठे हैं, अगर आप आप खुद किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है या किसी कॉर्पोरेट में है, you will have to engage with the larger audience. We'll have to increase our stakeholder base. Correct, ma'am. And So, we will have to take initiatives on our own side as well So basically, to pointing create it this out support as, system. yeah, the evolution is being, what I can see from this, from my perspective, is that the evolution has been exactly as the perception of everybody as humans has been of persons with disability. पहले ऐसा था कि मेडिकल मॉडल ही चलता था, मेडिकल मॉडल के बारे में सोचते थे और उसी को एक्सेप्ट करते थे. देन देयर हम लोग केम मरीज समझते थे उनको, मरीज देन नहीं समझते थे. हाँ देन हाँ हाँ. से सोशल मॉडल आया, देन अभी ह्यूमन सेंट्रिक मॉडल आ रहा है धीरे धीरे करके. सो दैट इज हाउ Absolutely. आई गेस द असिस्टेड लिविंग मॉड्यूल्स हैव आल्सो इवॉल्व्ड अराउंड द नेशन, एंड आई गेस मैं देयर पिछले हैज पाँच बीन. सालों में आपको एक शिफ्ट दिखाती हूँ. 5 साल हम्म. पहले सिर्फ कोई उनके बच्चे को अच्छे से रख के खाना पीना अच्छे से खिला के प्यार से रख रहा था, उनको लगता था ये बहुत बड़ा काम हो गया. पर मुझे लगता राइट. है कि वो तो एक बेसिक चीज है, ये हमारा बेसिक धर्म है टू रिस्पेक्ट हम्म. एंड गिव लव टू ईच अदर. हम्म. लेकिन अभी जो टाइम है उसमें उसकी पर्सनल कैपेसिटी बिल्डिंग कब तक हो रही है, समझ में? देन सस्टेनेबिलिटी, हम्म. sustainability of the person, of the provider, of the model, of the ecosystem. Now, the राइट. sustainability is the buzzword, capacity building is the buzzword, and there is a राइट. limit to it. Why should we, when we as an individual, you and me, we have our aspirations, raised to the power of infinity, why should we stop them from having that kind of, करेक्ट. you know? So, हम्म. uh, right now we are there. अब पेरेंट्स उनसे और की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल पीछे है, जो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे खड़े हैं, वो बेसिक के लिए मारामारी पे है. तो ये सारी चीजें, ये स्ट्रीम्स हमको कंकरेंटली चलानी पड़ेंगी विथ कंप्लीट अवेयरनेस. करेक्ट. क्योंकि सो अभी भी या. अब हम तो जो पेरेंट्स जो मिडिल क्लासेस हैं, हमको लगता है कि जो गवर्नमेंट की स्कूल है वो हमारे लिए नहीं है, हम बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए या उनको. एंड आई डोंट ब्लेम गवर्नमेंट ऑल्सो बिकॉज इतना पॉपुलेटेड कंट्री में गवर्नमेंट तो बिल्कुल जो मार्जिनलाइज है उनको देखेगी. सो वी आर लेफ्ट टू फेंड फॉर आवरसेल्व्स. So करेक्ट. that's why दैट्स I ट्रू. would say that we need to build our own communities. We have to tap our own resources and combine the effort. अगर आपके पास ज्यादा है तो आप ज्यादा करिए, अगर कम है तो दूसरे कम वाले के साथ मिलकर ज्वाइन होकर अपने अपने कैपेसिटी को बढ़ाइए. So that is what it is right now. So, when we are discussing on the lines of aspirations of an individual and also capacity building to find sustainability in when we are talking about assisted living, it's going to be a long process. It's not just कि बस एक एक
एक पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म हो गया. इट्स अ, I would say it's a dynamic thing. Obviously, It's not a yeah, passive yeah, thing. Yeah. absolutely, absolutely. Yeah. So maybe the next discussion point could be, what are the key factors that parents should consider before making that, before going into that transition? Once the adulthood comes in, and the thought of what after starts pitching in a person's head, what are the key factors? What should the parents be looking at? What should the parents be looking at externally and internally both? I mean, that would That's be. a very, very important question, and I would like all the parents who are listening or who will be listening to it later on to pay attention to what I am to say. The key Hmm. factors is, first of all, start from very basic, like I said, that start working towards his independence. अगर वो आपके साथ सोता है तो उसको अलग से लाना शुरू करिए. अगर आपके ऊपर सब चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है तो उसको अपने ऊपर से डिपेंडेंट करना थोड़ा छोड़िए. वो कपड़े अपने आप तय करना शुरू करे, अपने शूज अपने आप आके जगह पे रखे, अपनी जगह पे तय, जैसे बाकी सिबलिंग्स करते हैं उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाए. क्योंकि Correct. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, स्पेशली स्पेशली विद हाई फंक्शनिंग किड्स, वो उनको मेन Hmm. स्ट्रीम में एक्सेप्ट कराने के इतने चक्कर में रहते हैं कि वो उनको सेंसिटाइज करना भूल जाते हैं कि अपने ही इवन इफ दे Hmm. आर ऑन द स्पेक्ट्रम ऑन द हाईएस्ट ladder, they should be able to embrace Hmm. their own fellow beings with equal Correct. grace. Hmm. कई बार क्या होता है कि ये बच्चे, क्योंकि जब ये असिस्टेड लिविंग मॉडल में आते हैं, ये हाई फंक्शनिंग लो फंक्शनिंग ये सब हमारे कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं. ठीक है Hmm. ना. हाई फंक्शनिंग में जो ज्यादा बोल लेता है बट मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन नहीं करता, कंपेयर टू समबडी हु इज टोटली नॉन वर्बल, आप उसको हाई फंक्शनिंग कहोगे लेकिन वो मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन कर सकता है कि नहीं, उसमें हम चूक जाते हैं. फिर Hmm. उसमें सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट इतनी आ जाती है क्योंकि जो वेल ऑफ पेरेंट्स हैं वो उसकी सब बातें पूरी कर देते हैं लेकिन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें नहीं डालते. तो जब इस तरह का बच्चा हमारे सेटअप में आता है, उसको कंप्लेन रहती है कि मैं कहाँ आ गया, ये तो लो फंक्शनिंग लोग हैं, मैं इनके साथ क्यों बैठूं. Hmm. अब Hmm. लेकिन Hmm. लेकिन वो हाई फंक्शनिंग के साथ भी नहीं एसिमिलेट हो पाता. तो वो वो थ्रू अ मेजर आइडेंटिटी क्राइसिस. तो पहली Hmm. बात तो आपने उस बच्चे को अपनी स्किन में कंफर्टेबल फील नहीं होने दिया. ही विल Correct. कीप हैविंग दिस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस. Hmm. वो Hmm. बेचारा जिंदगी भर जूझता रहेगा इसी चीज से. वो आगे जिंदगी में क्या करेगा, वो कुछ उसको बहुत बड़ा चैलेंज आप देख जाएंगे बिकॉज ऑफ रॉन्ग पेरेंटिंग. Hmm. Hmm. तो Hmm. मैं ऑटिस्टिक हूँ, व्हाट इज व्हाई शुड बी हश अबाउट दैट. यस, आई एम्ब्रेस माय ऑटिज्म, इट्स माय यूनिकनेस एंड आई लव एंड आई टेक केयर ऑफ द फेलो ऑटिस्टिक बीइंग्स. ये Correct. ये Hmm. होना जरूरी है. मैं ट्रांजिशंस की बात कर रही हूँ और ये सब एक्सपीरियंस से लेके दावी बातें कुछ नहीं है. ठीक है ना. क्योंकि ऐसे बच्चे मेरे यहाँ अक्सर मिसफिट हो जाते हैं क्योंकि वो जो स्टाफ है, जो भैया लोग हैं, उनसे तो बहुत अच्छे से बात करते हो बट दे लुक Hmm. डाउन ऑन द फेलो रेजिडेंट्स एंड ऑल. तो Correct. ये एक बहुत Correct. बड़ा चैलेंज हो जाता है. दूसरी चीज, पेपर्स, जो बेसिक चीज, ये बच्चे का आधार कार्ड है, बच्चे का यूडीआईडी है, UDID. लीगल Hmm. गाइडेंस है, ये सब है. अगर आप देखें तो हमने फोरम पे फ्यूचर रेडी टूल किट बना के डाला हुआ है वहां पे. Hmm. हम लोग को ना कुछ भी लिखने की आदत नहीं है. मुंह जबानी, हमने अपने वेद पुराण भी मुंह जबानी पास कर दिए सबको ज्ञान कि वर्बली होता रहेगा. लेकिन Hmm. अभी ये वर्बली से कुछ नहीं होगा. वी हैव टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, उसका बिहेवियर क्या ट्रिगर किया, व्हाट थिंग मैटर्स एंड ऑल दैट. वो सारा लिखित में आपके पास फाइल होनी चाहिए और घर Correct. में सबको पता होनी चाहिए कि ये फाइल में क्या क्या है. इसके डॉक्यूमेंट्स है, हमारे डॉक्यूमेंट्स है. फिर कल को आप एज अ मदर क्या बारीकियां चीजें हैं जो आप चाहती है आपके बच्चे के बारे में सबको पता होनी चाहिए. व्हेन यू ड्रॉप Hmm. डेड, वो लिखिए ना, लिख के रखिए, चार लोगों को बता के रखिए ताकि ट्रांजिशन इजी हो. और ये कोई लिख के तो आता नहीं है कि भैया हमारी एक्सपायरी डेट यही है, इस दिन हम एक्सपायर हो जाएंगे. ये तो इट कैन हैपन किसी को भी नहीं टू पता. यू एनी टाइम, एनी टाइम. So we have to be prepared like this is the last day. Once you start doing that, every now and then question, if I am job getting tomorrow, what is it that I want to rest of the world to know about my child? ये फाइल Correct. यहाँ रखी है, इसको ये पैसे हैं, इसमें ये सेविंग है, ये सारी चीजें आप, अगर आपका बच्चा 14 साल का है और आप तो सोचते हैं कि 16 साल 17 साल में मुझे इसको असिस्टेड लिविंग में भेजना ही है, मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, Hmm. तो ये करिए. अगर घर पे है, अगर आप घर में ही रखना चाहते हैं तो
हमारे यहाँ मदर इंडिया कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा, तुम जाओ मैं देख लूंगी, तुम जाओ मैं देख लूंगी, प्लीज Yeah. डू नॉट वेरीफाई, दैट्स अ रॉन्ग पेरेंटिंग। पेरेंट का Hmm. काम सब्स्टिट्यूशन नहीं है, पेरेंट का काम है सक्षम बनाना, कि अगर आप 4 दिन नहीं हो तो बच्चा घर में उसको ये पता हो कि चावल कहाँ है, चीनी कहाँ है, चाय पत्ती कहाँ है। Hmm. 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 अगर घर रहते हुए उस बच्चे को ये नहीं मालूम है, अगर घर रहते हुए अपना बच्चा कपड़े निकाल के नहीं पहन सकता है, तो फिर आपने कुछ काम नहीं किया, आपकी पेरेंटिंग जीरो। आप 1 to 10 के स्केल में आप अपनी पेरेंटिंग देखिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं। ये Hmm. Hmm. आप अपने आप बनाइए अपना स्केल। क्या आपके छोटे बेटे को, बड़ी बहन को ये पता है कि अगर आप 4 दिन नहीं हैं तो उसकी कौन सी चीजें कहाँ हैं, उसको उसके उसके ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, और अगर ट्रिगर होता है तो फिर आपको कैसे मैनेज करना है, ये पता करना जरूरी है। उसके लिए एक्सपोजर दीजिए। 4 4 दिन घर से चले जाइए, बाहर चले जाइए, जख मारिए, लेकिन घर से चले जाइए, जो बाकी लोग Hmm. हैं उनको संभालने दीजिए, Hmm. उनको Hmm. प्रैक्टिस तो करवाइए ना। Correct. आप लोग गाड़ी जैसे सीखते हैं ना, गाड़ी सीखने के लिए पहले आपके पास एक ट्रेन ड्राइवर होता है, फिर लेकिन एक तो आपको अपने आप चलानी होती है कि डरते हुए चलाए। पेरेंटिंग इज ऑल्सो लाइक लर्निंग अ कार। थोड़े दिन ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस लेंगे, और उसके बाद आप प्रो हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप इतने प्रो हो जाएंगे कि आप दूसरे को लर्नर लाइसेंस देने लग बनेंगे। Correct. यू हैव टू डू दैट। यू कैनॉट बी अ पेरेंट, यू कैनॉट कीप डूइंग पेरेंटिंग परपेचुअली। हमारे यहाँ ये जो Hmm. अपने ऊपर ओवर डिपेंडेंस, हम ओवर डिपेंडेंसी भी ले लेते हैं, फिर हमें बेचारा भी बनना होता है। तो Hmm. विक्टिमहुड हमें चाहिए चाहिए ऐसे में। तो जब आप किसी सत्र के सामने खड़े हो ना, ये विक्टिमहुड लेके मत आइए। बोलिए, जब मेरे पास बच्चा आएगा मैं संभालूंगी, लेकिन मेरी मेरी यही चीज है, आप बच्चे, मैं आपके साथ हेल्प करती हूँ, फिर तो मजा आएगा वो इको सिस्टम को करने का। Hmm. बिकॉज Hmm. Hmm. आप आप वेल इक्विप्ड है, और आप, क्योंकि हम जो रेजिडेंशियल सेटअप चला रहे हैं, हम आपके बच्चे को ले रहे हैं, लेकिन हम उसको पाल सकते हैं, आपको नहीं पाल सकते। अब Correct. आप भी Hmm. हमारे लाइबिलिटी बन जाएंगे, तो वी विल गेट ओवरवेल्ड। अगर ऐसे करेंगे तो ये सेटअप बंद हो जाएंगे, Hmm. चलेंगे नहीं, Hmm. फिर हम सब डूबेंगे। Hmm. एक नैया में एक कैपेसिटी होगी ना, कितने लोगों को लेके पार कर सकती है। तो ये ये वाला सीन है, इसलिए Right. प्रिपरेशन जरूरी है। आज से करिए कि अगर आप कल नहीं है तो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, यही आपको सेट कर देगा। Right. So, as you said, ma'am, I believe this is like an international thing. केयर सर्विसेज का जो मॉडल है, किसी भी जगह में जो भी सेक्टर केयर प्रोवाइड करते हैं, केयर सर्विसेज, इट इज not I would like to say it is not give and take. It is a process where every party, every stakeholder is involved for a very long period of time. सो केयर सर्विसेज को उस नजरिए से देखना भी जरूरी है पेरेंट्स के लिए, कि अगर हम अपने बच्चे को असिस्टेड लिविंग में डाल दे रहे हैं, तो अगर हमें केयर प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके साथ एम्पैथी भी प्रोवाइड की जा रही है, एंड सपोर्ट एंड कंपैशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है, विच विल बी अ टू वे थिंग, राइट? एंड इट विल गो ऑन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम until that independence, that level of independence comes in. So, I mean, we can close before taking the questions. There is one more question, that there is one more discussion point basically that I would like to put in. What are the types of assisted living that are present right now in the Indian scenario? मतलब कितने तरह के होते हैं असिस्टेड लिविंग तो पेरेंट्स के एट लिए? प्रेजेंट ऑफकोर्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन अभी हम्म. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि, अभी थोड़े दिनों पहले एक आया था कि जैसे हम्म. कई बच्चे तो अनाथ है एंड डिसेबल्ड भी हैं, हम्म. कई बच्चों के पेरेंट्स बहुत गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन्होंने अपने बच्चे को ऐसे सेटअप रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाल दिया। लेकिन वो जब 18 ईयर्स के हो जा रहे हैं, तो देयर इज अ ह्यूज वॉइड। सुप्रीम कोर्ट हम्म. है आज तक गवर्नमेंट की इनके लिए क्या है, तो इट्स अ वेकअप कॉल फॉर एवरीबडी। राइट. तो एक तो वो एक स्टेटस है जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है। हम्म. दूसरा, अभी जैसे मैंने बोला, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज सेटअप है, 50+ के बच्चे हैं जहाँ पे वो या तो डॉम की तरह या हॉस्टल की तरह रहते हैं, कैफेटेरिया होते हैं। अब उसका एक एक्सटेंशन आया है कि जहाँ पे वो इस तरह का करके पेरेंट्स के लिए भी विलेजेस बना रहे हैं, पेरेंट्स की या गार्जियंस के लिए भी उसी प्रमाइसेस में या एडजेसेंट टू द प्रमाइसेस, जो कि जो पेरेंट्स भी ओल्ड हो रहे हैं उनके लिए भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इट्स हम्म. अ कॉम्बिनेशन मॉडल। देन देर आर हम्म. पीपल आर नाउ अप्रोचिंग, जैसे कि मैंने पहले बताया, ऐसे जो सीनियर सिटीजन की जो असिस्टेड लिविंग है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक
एक तरीके का बैंडविड्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो उसको एक्सटेंड करके करके हम्म, पर्सन विद डिसेबिलिटीज की फैमिलीज के लिए भी एक्सटेंड कर रहे हैं। जैसे हम्म, बैंगलोर में जो आ रहा है वो, जो एक टुगेदर करके कम्युनिटी बन रही है, दे हैव टाइड अप विद असिस्टेड लिविंग सर्विस प्रोवाइडर्स, और अपने लिए वो लोग कोई 20-25 फैमिलीज ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए वो हम्म, अलग उसी एडजेसेंट प्रमाइसेस के उसमें जो है 2-3 एकड़ में वो लोग डेवलप कर रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ मॉडल, वेरी डूएबल मॉडल, कि जिंदगी भर पेरेंट्स चाहते हैं जो साथ रहना, के आसपास ही रहे, तो ये उनके लिए मॉडल भी है। फिर हम्म, जैसे कि मैंने बताया, बिल्डर्स बिल्डर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो बिल्डर्स के साथ उन्होंने 2-3 बिल्डर्स, बिकॉज अगर 100 पेरेंट्स है, 50 पेरेंट्स है, तो दे हम्म, हैव अ कलेक्टिव बार्गेन पावर। तो बिल्डर के पास जा सकते हैं कि बोलेंगे भाई हम 50 पेरेंट्स हैं, आप ये भी हम्म, हमें दीजिए, तो क्या होगा, हमारे को एक्सेस मिलेगा जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं वहाँ के, या शॉप्स हैं तो उनके बच्चे वो शॉप्स में काम कर सकते हैं, हम्म, कम्युनिटी का कुछ क्लब व्लब जो चल रहा है उसमें अपने बच्चों को ट्रेन करके वहाँ लगा सकते हैं। दे कैन टाई हम्म, अप विद an agency like Alap or um, uh, any other NGO nearest to their district, and that become an extension for training and rehabilitation of the children while living within that community, and parents become support to each other. तो ये मॉडल भी आ रहा है। फिर उसके बाद यही चीज हम्म, मॉडल उसमें आ रही है कि एक पेरेंट ने इनिशिएटिव लिया, उनके पास अपना घर है, उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा तो यहाँ रहेगा, मेरे बच्चे के साथ मैं 5-6 बच्चों को रखने को तैयार हूँ, वो बच्चे का जो रहने वहने का वो है, वो आप दीजिए। दैट इज द काइंड ऑफ मॉडल विच आई एम डूइंग, वेयर आई एम केटरिंग टू लोकल पेरेंट्स ओनली, जो सब 10-15 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं, और हम्म, बच्चे वीकेंड्स में घर जाते हैं। पेरेंट्स को जब आना होता है हम लोग सब जने इकट्ठे मिलते हैं, वी हैव लंच, वी गो टू द पिकनिक। अभी हम लोग सब जयपुर टू, इट्स लाइक अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। हम पास भी हैं और दूर भी हैं, हम हम्म, डिपेंडेंट भी हैं, को डिपेंडेंट भी हैं, येट वी आर इंडिपेंडेंट, येट वी आर राइट। प्रोवाइडिंग स्पाइट टू ईच अदर। तो मैं, मुझे तो अपना मॉडल सबसे फेवरेट लगता है, और मुझे लगता है कि बहुत शहरों में जहाँ आप 15 एकड़ जमीन के बारे में नहीं सोच सकते हैं, इस तरह के मॉडल हाँ, चलेंगे, और राइट। बहुत अच्छे से चलेंगे, और इसमें ज्यादा आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। 5-6 लोग हैं अगर आप, and I started from an apartment, एक फ्लैट से शुरू किया था, 3 बेडरूम के फ्लैट से, 4 बच्चे हम्म, बड़े कंफर्टेबली रहते थे। आज हमने बंगला बना दिया, उसमें 8 बच्चे रहते हैं, आगे पीछे बड़ा लॉन है, वी आर ग्रोइंग आवर ओन वेजिटेबल्स। राइट। अभी हमें कुछ नहीं आता तो हम आवाज दे देते हैं, सब सबके घरों से खाना आ जाता है, तो हम तो बढ़िया से कर रहे हैं। एंड वी आर ऑल making those files, those family ready to sit together. राइट, राइट, सबके राइट। कागजात इकट्ठे हो रहे हैं। ये पॉसिबल है when you are smaller in number, you can give quality, you can give personalized attention। एक बच्चे को गिटार सीखना है, वो गिटार जाता है संडे को सीखने के हम्म, हम्म, लिए। एक बच्चे को एक अलग स्कूल में जाना है, वो अलग स्कूल में जाता है। एक को है कि घर पे ही बैठ के काम करना है, वो घर पे कर रहा है। तो ये 8 बच्चों में, 10 बच्चों में हम पर्सनलाइज अटेंशन दे सकते हैं। तो व्हाट वी कॉल इज IGP, इंडिविजुअल ग्रोथ प्लान। इंडिविजुअल ग्रुप प्लान, राइट। और इवन स्टाफ की कैपेसिटी बिल्डिंग हम करते हैं कि जैसे अगर किसी को गाड़ी नहीं चलाने, आई टेल देम कि नहीं तुम गाड़ी चलाना सीखो, तो हम्म, अगर हमारे ड्राइवर नहीं है तो तुमको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए। कुछ हम्म, नहीं है, तुमको तुमको खाना बनाना आना चाहिए। देयर आर यंग कैरेगिवर्स, अभी अभी 2 लोगों की तो शादी हुई है, अभी अभी तो वो बाप बने हैं, बट दे बिकम सच फैंटास्टिक सोर्स पर्संस। वो घर में अपना टॉयलेट साफ करने से लेके किचन में पूरा कुकिंग करने से लेके गाड़ी चलाने तक सब कर सकते हैं वो। जैसे आप और हम करते हैं घर पे, तो इट्स अ रेप्लिका ऑफ होम। So this kind of model will resonate with lot of people, जो राइट कि मैम। या। कुल 2-3 महीने में स्टार्ट हो जाता है। हम्म, एक बहुत तीसरी पर्टिनेंट। possibility है जो कि सारे पेरेंट्स मिलके सोसाइटी बना के 15 एकड़ हाँ, हाँ। लेके, जैसे कि हम सब यहाँ ही रहेंगे, खुद बनाएंगे, खुद चलाएंगे। हम्म, इसके भी ऊपर जद्दोजहद चल रही है, और कई लोग कर भी रहे हैं। पंजाब में इस तरह से सोच रहे हैं करने की, रांची हम्म, या रायपुर में सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं अभी। तो सोचना जरूरी है पहले, क्योंकि सोचने में ही 3 साल निकल जाएंगे आपको। क्योंकि एक कोहेसिवनेस लाना इन डाइवर्स पीपल, आपका कॉमन पॉइंट क्या है, दैट यू आर ऑल पेरेंट्स ऑफ स्पेशल नीड चिल्ड्रन। बाकी हो सकता है कोई कॉमन पॉइंट ना हो, तो इट्स लाइक एन अरेंज मैरिज। एक दूसरे को देखिए, समझिए, हैव अ कूलिंग पीरियड, एंड देन गो इन फॉर द हनीमून पीरियड। उसके बाद लाइफ लॉन्ग पूरा क्या क्या सेटल होना है, एडजस्टमेंट होना है, लॉट ऑफ थिंग्स, बट दीज आर द मॉडल्स। देन
This I am predicting that I have also reached out. There will be outreach programs. Like I have started telling the parents who are within the Gurgaon community, आपको अपने बच्चे को जिंदगी भर अपने साथ रखना है, आप रखिए। आप में से जब कोई एक रह जाए, you keep sending your child to us as and when you want, so that he gets used to of having, he feels that ये peer group है उनका। कल को आप में से कोई नहीं रहे और आप चाहते हैं कि अभी मैं आपको डॉक्टर के पास जाना, कहीं जाना हो, आप अपने बच्चे को हमारे पास भेज दीजिए। कल को जब आप भी नहीं रहे, आपका बच्चा उसी घर में रहेगा, सुबह हमारे पास आएगा, वापस घर पे जाएगा, और हम उसके साथ चाहे तो 3 बच्चे और रख देंगे। रादर देन पेइंग फॉर हिज अपकीप, ही विल स्टार्ट अर्निंग फॉर हिज अपकीप। उसका रेंटल इनकम से, तो ये वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हर तरीके की सेंसिबिलिटीज के लिए कई पेरेंट्स को, हाई मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा, मैं अलग नहीं करूंगी, फाइन, वो भी अच्छी बात है, लेकिन Hmm. क्या करोगे, कैसे करोगे, वो डिफाइन होना चाहिए। Right, right. तो ये भी इस तरह के Hmm. भी सेटअप आए हैं, या कई हाई फंक्शनिंग बच्चे हैं, आपस में मिलके रह रहे हैं, उनकी फैमिलीज उनको सपोर्ट करें, encourage करें, yes you can do it, rather than thinking down, और जैसे वो जो टफ, जो पेरेंटिंग के, नहीं 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 नहीं, अलग नहीं रह सकते, हम इन्फेंटलाइज करते हैं अपने बच्चे को। 30 साल के Hmm. बच्चे Hmm. को भी हम बच्चे ही कहते हैं, इन्फेंटलाइज करते हैं, मत कहिए ना। उसमें भी सेल्फिशेशन है, उसके लेवल के बियॉन्ड उसको देखिए। अगर वो Hmm. रहना चाहता है तो रहने दीजिए, फेल होगा, होने दीजिए ना, वो भी Correct. मॉडल आएगा, आना चाहिए, वेस्ट में है ये चीज। बिल्कुल। तो ये इस तरह से है। Actually, आपने जो बताया मैम, it answered, I guess, very well one of the questions that a parent, Dr. Shafi, I guess, has asked. Ma'am, what is the scope for middle class people? They cannot afford assisted living. So for them, any centers present, any government aid centers in India. Um, कहाँ से है, Sorry, ma'am. कहाँ से है, किस शहर से है, ये Uh, बोलो। he has put up his question. He or she has put up they have put up their question on YouTube. ओके, तो आई डोंट नो फ्रॉम विच सिटी दैट पर्सन इज। यस देयर इज अ Hmm. गैप, एंड अभी तो गवर्नमेंट इस बारे में वेकअप ही नहीं करी है। Hmm. आप आप पहली बात तो नई दिशा के सेटअप में जाइए, या फोरम पे जाइए, वहाँ पे लिस्ट है हमारी। पहले तो उस लिस्ट को अवेल करिए, देखिए आपके शहर के आसपास क्या है जगह, अगर उसमें है Hmm. तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप अपने अपने एरिया में 4-5 पेरेंट्स को इकट्ठा करिए, Correct. जो भी आपका इनकम ग्रुप है। अगर आप दो Hmm. दो बेडरूम का भी घर एक किराए पे लेके अफोर्ड कर सकते हैं, तो 4-5 पेरेंट्स मिलके कॉमन रिसोर्स को शेयर करके, या आपकी आपका बच्चा जिस भी एरिया में जाता है, उसके साथ टाई Hmm. अप करके बोलिए कि हम आपके साथ हैंड होल्डिंग करने को तैयार है। ये हम 2 कमरे का बेड है, यहाँ पे 4 बच्चों को रखेंगे हम, दिन में आपके पास Hmm. आएंगे, रात को ये यहाँ रहेंगे, जो खर्चा आएगा हम 4 जने आपस में डिवाइड करेंगे। Hmm. ठीक है, ये एक्सक्यूज है सब, कि हम पैसे, हम कौन कह रहा है पैसे। अब आप जिस भी लेवल पे हैं इकोनॉमिकली, आप उसी हिसाब से आपने अपनी दुनिया बसाई हुई है ना, तो आपके बच्चे की Right. भी दुनिया उसी हिसाब से बसेगी। Hmm. Hmm. तो क्या सिंपल एज दैट। ठीक है ना, 4 लोग हैं, आप रोटेशन में एक दूसरे के बच्चे को रिस्पेक्ट देना शुरू करिए। इंटेंट ठीक होनी चाहिए, इंटेंट होनी Correct. चाहिए। इंटेंट में क्या प्रॉब्लम है, और दैट इज नथिंग टू डू विद यू बीइंग वेल ऑफ और नॉट वेल ऑफ। इंटेंट में है कि मैं, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को देख ले, मुझे फिर बाकी से मतलब नहीं है, तो सभी ऐसे सोचेंगे फिर। Hmm. 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 मिनिमम रिसोर्स में भी एक झोपड़ी भी अगर है, उसमें भी 4 बच्चे अगर इकट्ठे रहने हैं, अगर आपकी इंटेंट ठीक है, यू कैन क्रिएट योर ओन सपोर्ट सिस्टम। हजारों लाखों ऐसे स्टोरीज आपको मिल जाएंगी जो इस तरह के सेटअप को चला रहे हैं, तो उनसे संज्ञान लीजिए। और नहीं तो अगर आप गवर्नमेंट को एंगेज करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट के पास जाइए ना, हु स्टॉपिंग यू टू गो एंड डिमांडिंग दैट। आप अपने एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस है, Hmm. उसके Hmm. पास Hmm. जाइए ना, 4-5 पेरेंट्स मिलकर जाइए कि भाई ये चीजें बताइए क्या कर सकते हैं। हर एक एरिया में जो मास्टर प्लान होता है सिटी का, उसमें कम्युनिटी सेंटर्स एलोकेटेड होते हैं, उनको Hmm. बोलिए दीजिए हमें 2 कमरे दीजिए, यहाँ से दीजिए, या आप गवर्नमेंट की तरफ से आप ये करिए, उसको चलाने को तो बाहर जाना उसमें। आजकल गवर्नमेंट में भी जो नया अभी जो नस्ल आई है गवर्नमेंट के उसमें, वो भी बहुत पढ़े लिखे समझदार सेंसिटिव लोग हैं, हम जैसे और आप जैसे लोग हैं, वो भी करने को तैयार है, उनको भी डायरेक्शन मिलेगी।
मैं तो कई गवर्नमेंट विजिट करते हैं, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं ये चीज। मैंने अपने पीडियाट्रिशियन को जो है पीडियाट्रिक को ऑटिज्म के बारे में तो मैंने अवेयर किया। हम्म। तो मैं बोल रही हूँ ना आपको, इसलिए मैंने ये बात शुरू जो ये टॉक सीरीज जो हमारी हो रही है, ये डिस्कशन मैंने इसीलिए रखा था टू सेट द प्रियम्बल। हम कहाँ है इस समय? आपके करेक्ट। पास रेडीमेड कस्टमाइज प्लान नहीं है। हम जिस हम्म। जगह पे खड़े हैं वो ग्राउंड जीरो है। हमारी तो रेस अभी शुरू होनी है, अभी तो हवा में फायर किया गया है। और आपको कैमरा काटने लगाइए, आपको दिशा दे दी गई है कहीं आप ट्रैक में उल्टा ना भागे, एटलीस्ट सीधे तो भागे। तो ये जवाब है मेरा आपके लिए इस समय। बाकी ही कैन कनेक्ट विद मी सेपरेटली ओवर ईमेल एंड आई कैन गाइड Right. हिम। So we will share all the details of Alap on our YouTube channel. Chat पे हम डालेंगे सारे parents. They are requested if you want to reach out to Neena ma'am, please see that details, contact details of Neena ma'am, and reach out to her. This was an I guess this was an amazing and enlightening session. Ma'am के life के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला हमें, and parents को inspiration भी मिली होगी बहुत ज्यादा कि कम्युनिटी बिल्ड किस तरह से करनी है, उसको एग्जीक्यूट किस तरह से करना है, प्लान किस तरह से बनाना है, और अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम कैसे उनके अंदर देना है। पेरेंटिंग के बारे में हमने आज बहुत कुछ सीखा है, अपार्ट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग असिस्टेड लिविंग। पेरेंटिंग के बारे में भी हमने बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो सो मच मैम। आई गेस दिस वाज एन अमेजिंग सेशन, एंड हम आगे भी आपके साथ रहेंगे दिस पर्पल फेस्ट में, और आपके साथ और भी दो सेशंस हैं, एंड इट विल बी एन अमेजिंग सेशंस। पीपल प्लीज ज्वाइन इन, हम अलग अलग टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं आगे 2 दिनों में। सो इट्स गोइंग टू बी we are going to move ahead with this. Thank you so much, ma'am. थैंक यू, बाय बाय।